टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? Good morning, man. गुड मॉर्निंग Good, राजवीर, ma'am. हाउ वाज I'm योर fine. वीकेंड? वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद, हाउ वाज योर वीकेंड? प्रैक्टिस किया? Good. Yes, man. वेरी नाइस। सो क्या क्या प्रैक्टिस करा? ओनली स्पीकिंग या रीडिंग राइटिंग भी? And speaking, reading, or listening. ठीक है, तो स्पीकिंग में तीनों पार्ट्स किए या ओनली पार्ट 3 जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम पहले तीनों पार्ट किए, फिर ओनली पार्ट 3 कल किया। ओके, ग्रेट, वेरी गुड मॉर्निंग स्वाति, आई कैन सी सम न्यू फेसेस। गुड मॉर्निंग क्रीना, गुड मॉर्निंग एसके। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आज हम क्या करने वाले हैं पार्ट 3 में, पता है किसी को? होमवर्क करा? यस, आज मैम पार्ट 3 में कुछ सोसाइटी और एजुकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस है ना। तो स्पीकिंग पार्ट 3 में हम कुछ टॉपिक्स ऐसे करेंगे जिनका हम एडवांस वोकैबुलरी के साथ यूज करेंगे। बेसिकली आज का जो सेशन है वो नॉर्मल नहीं है, आज का जो सेशन है वो लेवल अप सेशन है। बिकॉज आज हम पार्ट 3 का जो एक बॉस लेवल होता है ना, कहते हैं, उसमें एंटर करने वाले हैं। पार्ट 2 में एग्जामिनर बोलता है डिस्क्राइब करो, बट पार्ट 3 में एग्जामिनर क्या बोलता है? वाई, हाउ, शुड, डू यू थिंक, ये सब चीजें। तो मतलब एक सीआईडी की इंटेरोगेशन होती है ना, वैसा वाला टॉपिक है ये पार्ट 3। आप अगर आप पार्ट 3 को हैंडल कर लेते हो ना, आप बैंड 7 से दूर नहीं रह सकते। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब पार्ट 1 इज योर इंट्रो राउंड, पार्ट 2 क्या है? एक स्टोरी है, लेकिन पार्ट 3 क्या है? मोर डेप्थ, इन डिटेल। जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, आपको उनका इन डिटेल एक्सपैंड करके आंसर्स देने हैं, राइट? तो आपको पता है कि स्पीकिंग पार्ट 3 में ओपिनियन बेस्ड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जनरल आइडियाज आते हैं, कोई पर्सनल स्टोरी नहीं, यहाँ पे कोई आए अपना पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देगा, सब सोसाइटी से रिलेटेड जनरल रिलेट बात करेंगे। तो हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा होगा? सोसाइटी से रिलेटेड, एडुकेशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट? सो सब रेडी है? यस एवरीवन? Yeah, yes, ma'am. Okay, great. Let me just share my screen. So I'm gonna ask first a single question. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगी, पहले आप मुझे वो आंसर दोगे क्योंकि मैं पार्ट 3 आपको करा चुकी हूँ, राइट? तो आंसर कैसे देना है, फिर हम उसमें एडवांस वोकैबुलरी ऐड करेंगे कि हम इसे कैसे बैंड 7 एंड अबव बना सकते हैं, राइट? सो आई एम शेयरिंग अ क्वेश्चन हियर। How has society changed in the last 20 years? अब हाउ वाला क्वेश्चन है, हाउ वाले क्वेश्चन के लिए हम कैसे आंसर देते हैं? मैंने आपको बताया था कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, PFRR। दैट मीन्स हम प्रेजेंट भी बताएंगे, फ्यूचरिस्टिक भी बताएंगे, प्लस रीजन भी देंगे और रिजल्ट भी देंगे। एग्जाम्पल ओवरऑल आप सब बता सकते हो यहाँ पे। रिमेंबर? यस, आई वॉन्ट आंसर्स। हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन द लास्ट 20 years? सो ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्री डिसएग्री है, पास्ट वर्सेस है, या फ्यूचरिस्टिक है? कैसा Ma'am, क्वेश्चन है? past versus. यस, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन द लास्ट 20 years? 20 ईयर्स में क्या चेंज आया? तो आप पास्ट की भी बात करोगे, प्रेजेंट की भी बात करोगे, क्या फ्यूचर की बात कर सकते हैं यहाँ पे? क्या फ्यूचर की बात Yes, करना? ma'am. यस मोहम्मद? Result
यस मैम, रिजल्ट के साथ आप फ्यूचर प्रेडिक्शन भी दे सकते यस, बट आई वुड सजेस्ट जब यहाँ पर विल नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, तो आप फ्यूचर को अवॉइड करना। इसीलिए स्पीकिंग एग्जाम में सबसे ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, बिकॉज यहाँ राइटिंग में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रिमेंबर, मैं आपके इजी व्यू के लिए आपको क्वेश्चन लिख के देती हूँ, अदरवाइज एग्जाम में नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जब आप सुन रहे हो क्वेश्चन को, तो आप उसे बहुत ध्यान से सुनो। Right? Okay. So, how has society changed in the last 20 years? Anyone who can answer this? आपको जो आंसर देना है हैं। आप वो दो, हम उसमें अपग्रेड करेंगे वोकैबुलरी को, एडवांस करेंगे। दिस इज सोसाइटी टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? सोसाइटी। कैन आई ट्राई मैम? यस मोहम्मद, प्लीज गो अहेड। In the past, societies were not well developed and drainage systems are not too good. Nowadays, drainage systems can be improved and they enhance the uses of wastage in store and they can use as a fertilizer for fields. So it's a better conventions for everyone and the wastage are used for their fertilizers. Yes, good. Anybody else Yes, who would ma'am. like to answer? Yes, Rahul. 20 years ago, society depend on more simple life and community well oriented and also help each others and communication mostly based on face to face. But in today, society depend on technology and fast oriented and also more urbanizations. So people move to big city for good job career opportunities. राइट। सो देखो, जब ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है, हम पास्ट सिचुएशन बताएंगे, प्रेजेंट सिचुएशन बताएंगे, और क्या देंगे? रिजल्ट। राइट। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू आंसर, हु फील्स कि मेरे पास इसका बेटर आंसर है? यस, एनीवन? Can I try, ma'am? यस प्लीज, व्हाई नॉट? Actually, ma'am, I'm driving, so if it's a little bit disturbance, I'm नो sorry. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई। A sea change has been witnessed in society for last 20 years. Like there was more financial freedom before, like in the past, but now for the busy schedule, people are now more extravagant, or we can say they don't have time for anyone. So it's actually it usually stops the actual growth of the person, because nowadays they just have limited, they have so many resources, but they have limited time, so they can enhance their like personality or their actual life. That's the main change that I witnessed from last 20 years. राइट। सो बेसिकली देखो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड इन द लास्ट 20 ईयर्स? आपको पास्ट के बारे में बताना है और अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताना है कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब अगर हम पास्ट की बात करें, सोसाइटी वॉज मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड। कैसी थी? पीपल दे स्पेंड टाइम विद फैमिली, नेबर्स, एंड लाइफ इट एक्चुअली मूव्ड एट अ वेरी स्लोअर पेस। कम्युनिकेशन कैसे था? आप कोई भी टॉपिक के बारे में यहां बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे था? मोस्टली फेस टू फेस, और रिलेशनशिप्स वर मोर स्ट्रॉन्गर। प्रेजेंट की बात करें तो सोसाइटी क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन, फास्ट पेस हो गई है। कम्युनिकेशन के लिए पीपल आर मोर हेविली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स। फैमिलीज की बात करें, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, बिजी वर्क स्केड्यूल है। डेली इंटरेक्शंस अगर हो रहे हैं तो वो किसके थ्रू हो रहे हैं? वर्चुअल। आपको एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है। जो पास्ट में था उसका ऑपोजिट ही तो प्रेजेंट में हो रहा है। अब डिफरेंस आ गया ना 20 इयर्स में, बहुत ज्यादा।
तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? सोसाइटी इज नाउ मोर efficient and it is globally connected also, right? सो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसे एक्सपैंड करने से पहले। अगर आपने ऑफ द टॉपिक जाके आंसर दिया, इररेलेवेंट आइडियाज की बात करी, सो अगेन एग्जामिनर को अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिला, ही विल आस्क यू द क्वेश्चन अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग हरप्रीत, नेहल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो आपको आंसर देने से पहले ये ध्यान से सुनना है, बी वेरी अटेंटिव जब एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, राइट? सो आप बताओगे कि सोसाइटी हैज चेंज सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 2 decades। इन द पास्ट पीपल, आपको बहुत ज्यादा लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं है, आई वुड से पूरा पैराग्राफ नहीं बोलना। अगर आप 2 sentences पास के बारे में, लाइक एक टॉपिक की 2 लाइन पास के बारे में बोल सकते हो, द सेम जो चेंजेस अब हुए प्रेजेंट के बारे में बोल सकते हो, एंड 1 statement फॉर रिजल्ट, 5 total statements आर मोर देन इनफ फॉर योर part 3। So in the past, people were more connected, but now they are more connected digitally. पहले इमोशनली कनेक्टेड थे, अब डिजिटली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल चाहो तो किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। अर्लियर नेबर्स यूज टू टॉक फेस टू फेस, बट अभी आज क्या है? मोस्ट कम्युनिकेशंस हैपन थ्रू मोबाइल फोन्स। Overall, I believe society has become faster and more convenient, but slightly less personal, I would say. राइट? अब आपको इसमें वोकैबुलरी क्या यूज करनी है? मैंने क्या क्या वर्ड्स अभी तक बोले? डिजिटली कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड, कन्वीनियंट। आपको एडवांस वोकैबुलरी यूज करनी है। अब आपको part 3 में आंसर्स देने तो आ गए हैं, बैंड 7 तक तो आप पहुंच गए हो, लेकिन 7.5 और 8 तक कैसे पहुंचोगे? जब आप वोकैबुलरी को अपग्रेड करोगे। अगर मैं बोलूं फास्ट पेस लाइफस्टाइल हो गया, अब प्रेजेंट सिचुएशन, डिजिटली कनेक्टेड है हम लोग, सोशल इंटरैक्शन। सो टॉक अबाउट दीज वर्ड्स जब हम part 3 की बात करते हैं। अभी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन में? अर्बनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? सिटीज में। कम्युनिटी ओरिएंटेड, मैंने फर्स्ट आंसर में ये वर्ड यूज करा था। कम्युनिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? एनीवन पता है किसी को? यस, कम्युनिटी ओरिएंटेड। कम्युनिटी ओरिएंटेड का मतलब होता है जब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो पहले की सोसाइटीज क्या होती थी? कम्युनिटी ओरिएंटेड होती थी, राइट? क्लियर एवरीवन? सो यू कैन यूज दिस एडवांस वोकैबुलरी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, ready for the next one? Yes, ma'am. Okay, now I'm gonna ask one by one to all. राजबीर ने आंसर दिया, राहुल, राजबीर ने नहीं दिया अभी आंसर, राइट? मोहम्मद एंड राहुल ने दिया, करेक्ट? And Gursimran also, right? Okay, Rajveer, now you are on the first one on my screen. So question for you is, again, the topic is society. The first question is, do people spend time with their families? Can I speak, ma'am? Yes, yes, why not? Nowadays the people has their busy schedule, so they go to their jobs in a daily basis. So they get to spend a lot of time with their family and with their another relatives or friends. And for example, uh, also my parents are going to jobs, so they didn't spend most time with me and with my younger brother. And also they may spend most of time with us in the weekends, such as Sunday or sometime another holiday. So I think that with in that situation,
they face a lot of difficulty because of busy schedule, and they feel very Mm-hmm. uncomfortable because they didn't spend a lot of time with their family. So that's it. Yes. Anybody else? Yes, SK. A person with the name of SK. Swati. Swati, can you answer this question? Manpreet Kaur, Aman Man, Avrish, Samar. Hello. Yes, Samar. May I, ma'am? Yes, please. Do people today spend enough time with their families? Uh, I like to say that unfortunately, nowadays people are not able to spend their enough time with their family as they are busy with their career, Hmm. because career is the main priority for everyone. Hmm. To earn money Hmm. or to make healthy future, Hmm. so they have to leave their home Hmm. and move towards the uh, job area Hmm. where they get. Hmm. अच्छा, वन थिंग आई वांट टू ऐड इज हम बिकॉज का यूज ना बहुत कम करेंगे. बिकॉज की जगह हम क्या स्टेटमेंट्स यूज करेंगे? एज अ रिजल्ट. राइट? ओके, अमन, यू वर रेजिंग हैंड. यस, कैन यू आंसर Ma'am, नाउ? nowadays people don't relate that relationship that they were having previously because of the digitalization डिजिटलाइजेशन. digitalization. यस. Because of that, many things change in our life also. What thank you, ma'am. One point was I was having. नो प्रॉब्लम. अब देखो, सोसाइटी टॉपिक में ना आप इस वोकैबुलरी का यूज कर सकते हो बहुत बार, बट आई वोंट से कि हर वर्ड में. मोहम्मद, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बिकॉज आपको यूज नहीं करना, एज अ रिजल्ट आप यूज कर सकते हो. एज वर्ड यूज हो जाता है बिकॉज के रिप्लेस में. ओके. अब देखो, फास्ट Can पेस I tell you? लाइफस्टाइल. अगेन अगर हम टुडे की बात करें, इन द प्रेजेंट, nowadays many people they led a fast paced lifestyle, and they are heavily influenced by digitalization, digital distractions. Again, I'm giving one more advanced vocabulary जो आप इन टॉपिक्स में यूज कर सकते हो. डिजिटली कनेक्टेड है तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी. एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा? फैमिली टाइम इज लिमिटेड. अब मैंने बिकॉज नहीं बोला, बिकॉज फैमिली टाइम इज लिमिटेड नहीं, एज अ रिजल्ट फैमिली टाइम इज लिमिटेड. इंटरैक्शंस क्या है? शॉर्ट. सो रिजल्ट क्या है? दैट फैमिलीज हैव बिकम मोर इमोशनली डिस्टेंट, मतलब इमोशनली कनेक्टेड नहीं है. एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? स्लोली वीक हो रहे हैं. ग्रेट. गॉट इट? यस. यस एवरीवन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. आज की Yeah. लाइफस्टाइल की बात हो रही, तो आज की लाइफस्टाइल बतानी है ना आपको कि Yes. आज लोग कैसे कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. डू पीपल टुडे स्पेंड इनफ टाइम विद देयर फैमिलीज? नहीं. फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, वो लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं. राइट? बिकॉज वो लोग डिजिटली ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्ट होने की वजह से. वर्क प्रेशर, आप यहाँ वर्क प्रेशर की बात भी कर सकते हो. राइट? सो जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो इन दिस सोसाइटी टाइप टॉपिक्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Do you think people are becoming self-centered nowadays? Yes, who will answer? Avrish? Ma'am, self-centered What is means self-centered now? Batao. Yes, anyone? Yes, ma'am. Self-centered. Try to guess the meaning of this. I think मैम अकेला खुद के अंदर ही रहना. खुद के अंदर ही Yes, a रहना. person who only think about themselves, खुद की needs, खुद की problems, किसी और का कुछ नहीं. Just give me 1 minute, Selfish guys. means Just give me 1 minute. Yes, everyone. So what is self-centered? A person who thinks mainly about himself, right? His own needs, not caring not caring much about any other feelings or problems. सिर्फ अपने बारे में सोचना is a self-centered person. Please mute yourself. Yes. hello. Yes. Yes, Can Gursimran. I answer? Yes, please. Why not? Self-oriented. Wait, Gursimran. Wait. Somebody who said, can I answer? I missed out Yes, the ma'am. name. Ma'am, that was me. Avrish. Okay, yes, Avrish. Ma'am, nowadays people are self-centered and because there is a sense of competition all over the world. They have their schedule, they have their personal life, and they are trying to make themselves better. The main reason behind them is the digital distractions and the influence they got by YouTube and social media, and they are continuously trying to improve themselves. And when they achieve something, there is a goal ahead, and they started following them. So Yes. like there is never-ending race, and they become more and more self-centered. That's what Yes. I think. Correct. Yes. Anybody else? Yes, Gursimran. You can continue now. Is it the self-oriented also similar like the self-centered? Sorry, I'm out. Yes. Self-oriented Yes. the same like the self-centered? Self-focused. Yes. Self-focused also, self-oriented also, self-observed also, you can say. And even you can talk about individualistic. That is also, I would say, a synonym for self-centered person. Okay. Okay. Got it. Basically, a person who only focus on himself and ignore the feelings of anybody else, right? Never care about any other feelings or problems. So that person is called as self-centered. Okay. So yes, you can say to some. Now the question is, do you think people are becoming more self-centered nowadays? क्या लगता है आपको कि हाँ आजकल लोग ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं? अगर आपको लगता है yes, you can say yes to some extent. I believe that people are becoming more self-centered. अगर आपको नहीं लगता तो आप नहीं बोलो. क्यों? क्योंकि पास्ट में क्या होता था? People they depended more on each other, but now everyone is busy with their own life, right? आज क्या चल रहा है? In the present modern society, they always encourage individualism, right? Where personal goals, self success ये ज्यादा prioritize होती है. तो इससे क्या हो रहा है? What is the result? As a result, the people they tend to be more focused on the personal growth पे. और वो किसकी वजह से? I would say that it is mainly due to social media influence, right? Next question. How does modern lifestyle affect family relationships? Yes, Swati. Okay, Bhumika, can you answer this? How does modern lifestyle affect family relationships? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Good morning, अब ma'am. मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट करता है फैमिली रिलेशनशिप्स को? अगेन द सेम थिंग. देखो, आपके पास कितने 4 to 5 minutes है only in part 3. Try to use this vocabulary. Again, a fast-paced lifestyle
फास्ट पेस लाइव्स भी बोल सकते हो. Okay. डिजिटली कनेक्टेड, डिजिटली एंगेजमेंट भी बोल सकते हो. आई एम गिविंग यू ऑल द एडवांस वोकैबुलरी टुडे. इमोशनली डिस्कनेक्टेड, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं. Can I give answer, ma'am? Yes, please. Okay. Yeah, modern life affects some family relationship in many ways, but people are very busy with like life schedules and work and studies. And mobile phones and social media also reduce face-to-face interaction. Like we can see, digitalization is communication less than offlines, and people most are preferred to online communications. Because of this, emotional bonding becomes weaker, and some families try to connect with spending time together weekends and holidays. So most of things are disconnected slowly and slowly. Those are happened to in past days in offlines. Yeah, I don't know. That's it. So modern lifestyle, they have a significant effect on the family relationships. Today, people live fast-paced life with long working hours and constant digital engagement, which actually reduces the quality family time, right? As a result, communication with families have become more limited. Although family members, they live under the same roof, but they are often emotionally disconnected because of the, or I would say replaced the, because due to the stress and screen dependency, right? And this is the actual scenario these days. People live under the same roof, but they are not connected because they're always into screen, right? Yes. Next one. Is tradition still important in today's society? Yes, Noor. Yes, Yes, ma'am. Noor. Yes, ma'am. Is Good morning. tradition still important in today's society? Tradition. Hmm. I feel like not all the traditions are like important, but I would feel there are few traditions that need to be taken in consideration. Hmm. Like, ma'am, we have some traditional values, right? For the Hmm. children, they should learn those values. For example, respect and keeping in contact, like with interaction with the relations. I mean, what else? So I'm not getting actually, ma'am, like what to. Okay, no problem. I have to. Let's wait for other one, then I'll let you know. Okay. Yes, Aman. tradition play a huge role or important role in our society because it connect to our roots Hmm. and tell us how our tradition how our tra- how our tradition were there uh, and help to Hmm. connect our it also help to connect our families Hmm. uh, and to know their past Hmm. and Roots. roots. These I was saying traditions, they help people to stay to connected connect to their with roots. their roots. Hmm. और क्या क्या कह सकते हैं मैम? Huh. Okay. A person with the name of iPhone 3. Can you answer this question? What's your name? iPhone 3. Ma'am, can I? Yes, Avrish. Ma'am, I think traditions are the savior for today's society. These are they are very important for where the digital distractions can be minimized. Hmm. They can engage people
to connect emotionally, especially our traditional events and traditional cultures help people to know each other and am I distracted. Sorry. Okay. So let's come to the first answer given by Noor. Noor, you mentioned that not all traditions are important in today's society. Only few are important, right? So you can say that only few meaningful traditions still hold value in society. Yeah. Many outdated customs or traditions have faded because they really don't fit in the modern society or modern lifestyle. Yes. But Yeah. however, traditions related to family, festivals, cultural identity, they are still respected, right? So what vocab we can use here? Meaningful traditions. Yeah. Cultural identity, they are still respected. These traditions, they actually help you to stay connected to their roots, and it actually Yes. strengthens the family bonds, right? Okay. Yeah. Okay, now let's come to the another topic about education. ठीक है? So again, you have to answer the same way. You will be upgrading the vocabulary using some advanced vocabulary words here. Should school focus more on skills than marks? Swati, can you answer this? Soumya Gupta. Soumya, you usually enter the class at first, but why not answering? Why not responding? Okay, anyone? Should school focus more on skills than marks? What do you all believe? Yes. I I do strongly believe believe. Can I yes. Yes. Yes, Yeah. please. Yes, Mohammed. can I ask? Yes, yes. Why not? Okay. Definitely, schools mainly focus on Hmm. skills because it's a basic requirement in futures. Hmm. If students know about the practical life, then they definitely do well in their future. On the other behalf, if they don't have a practical life, then they definitely not get their desired destinations. Hmm. Nowadays, British mostly focus on practical life that can enhance the ability of Hmm. student creativity and also thinking. Hmm. So it might be more important in developing country to students can be improve their strategy by learning new skills. Hmm. Yes, great. Okay. Yes, Soumya. Hello. Yes, yes. Yes, school have to focus on skill also because in nowadays, Hmm. uh, skill is matter too much, Hmm. and like in foreign countries, related to marks, they focus on skills also. Hmm. So school have to focus on that. School have to focus on skills Hmm. rather than marks. Hmm. So what you can mainly focus here is that academic scores, they measure memory, but skills like critic अब skills कौन सी आप बताओ तो सही, elaborate करो. Skills जैसे कि critical thinking, communication, problem solving, they prepare the student for real life situations, है ना? आपका क्वेश्चन है कि शुड स्कूल फोकस मोर ऑन स्किल्स देन मार्क्स. आप ये तो बता रहे हो कि हाँ करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए? वो रीजन क्या है? एग्जाम्पल क्या है? जब तक वो ऐड नहीं करोगे आपका आंसर जस्टिफाई नहीं होगा. आप तीनों स्टेटमेंट में बस यही बता दो कि हाँ स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स. ब्रिटिश लोग भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा है, बट क्यों हो रहा है? रीजन बताओ. अगर एक्सेसिव फोकस होगा मार्क्स पे, इट विल क्रिएट एकेडमिक प्रेशर
and it will limit your creativity. So इसका result क्या होगा कि many students they perform well in exam but they will struggle in practical skills and even the confidence outside the classroom or outside the school, right? So Yes, here ma'am. you can talk about skills की बात करो. कौन कौन की skills? Again use some vocab here. Talk about the scenario here. I'm writing all the vocab so that you guys remember whenever you will practice this type of questions. ठीक है? तो कैसी लर्निंग होनी चाहिए यहाँ पर? स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, राइट? बेस्ट अप्रोच शुड बी अ बैलेंस सिस्टम होना चाहिए वेयर स्कूल शुड वैल्यू बोथ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो और स्किल बेस्ड लर्निंग भी हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you think teachers are still respected as before? Yes, Swati, can you answer instead of writing? Do you think teachers are still respected as before? अब as before का मतलब क्या है? ये कौन से type of question है? Past, present. Yes, this is past and present. Yes, ma'am. Comparison. तो आपको comparison past और present दोनों का करना है यहाँ पे, right? Yes, ma'am. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन क्योंकि अब आपने सारे टाइप्स कर लिए, राइट? ओके, चलो, हु विल आंसर? स्वाति, राजवीर? यस, राजवीर, योर टर्न. Okay, ma'am. Yes, ma'am. I think teachers are still respected as before because nowadays teachers are many. They have many education as compared to past. In past, some teacher didn't have much knowledge about some things, but nowadays they have all about knowledge about the all subject related to the any type of subject such as English, math, and so on. So. That's as a result, I think student still respected them and also they gain some information from them. So that's it. Yes. So you believe that yes, teachers are still respected as before, especially in society, I would say. Strongly Yes. value, right? Teachers, they Yes. continue to be seen as their mentors because they actually shape students' future. Yes, Teaching ma'am. methods, they have become more modern, more interactive, but the core role of teachers, I would say, it will remain unchanged, or it is unchanged, I would say, not will, I will. Okay, so as a result, yes, Rakesh, as a result, students, parents, they still appreciate teachers. अब आप टीचर्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, राइट? रिस्पेक्ट की व्हाट vocab you can use? Guidance, dedication, expertise. Future, ma'am. Yes, modern and interactive teaching methods also. Okay. Yes, ma'am. Yes, Rakesh, can you answer? Chanpreet, you have a different answer. Please go ahead. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Why Yes, so ma'am. late today? I don't Sorry, want my ma'am. regular students to late. So, like I'm, you. I'm really, I'm Mm-hmm. really sorry, ma'am. I'm really sorry. Actually, I woke up late today. Sorry. Yes, ma'am. Be I an don't early think, ma'am. riser. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I don't think teachers are respected much as they were in the past. Uh, Although it totally depends from situation and varies from place to place.
Hmm. And I think uh, one of the major reason for the decline in the Hmm. respect of the teachers Hmm. is the social changing in the social attitudes and Hmm. the increased access to information. Yeah. With the use of internet and social media, students can easily question Hmm. what they can ask to the teachers, and sometimes without understanding the difference between the healthy questioning and their disrespect. Hmm. As a result, the teachers' authority in the class has been weakened over time. Hmm. Yes. So you believe that you don't think teachers are respected as much as they were in the past. Earlier, Yes, past में क्या होता था? Teacher was seen as authority figures. But ma'am. now the guidance was really questioned, I would say. Present में, there's a changing social attitudes, as you mentioned. Digital access to information also. And sometimes there is an increased parental involvement. जो क्या कर देती है? Reduce कर देती है. Right? मैम Yes, ma'am. ऑल्सो ये भी यूज कर सकते हैं ना, इन द पास्ट टीचर आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर हाँ, स्टूडेंट exactly. एंड फोकस Yes, मोरली theoretical knowledge, so yes, 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 less interaction yes, between teacher yes, and yes, student. yes. Hmm. Yes. But in the But present, we do respect you, ma'am. Array, it's okay. It's just a question. okay. Okay, next question. Is online education as effective as classroom education? Now I want a feedback because we all are in online education. Yes. तो सब पॉजिटिव बोलने वाले हैं, कोई नेगेटिव भी है? Hello, ma'am. Yes, yes. Um, Hmm. I would like to say that some extent this line justified Yes. because not every not each subject or Hmm. curriculum is taught in online education. Hmm. Sometimes students need uh, classroom education because they feel ashamed Hmm. or they don't get Hmm. um, Mhm. um, encourage and they don't have any uh, Hmm. encourage or Hmm. what I will मतलब मैं कैसे बोलूँ मैम देखो, यू कि कैन मतलब हम टॉक लोग अबाउट सेम जो, स्ट्रीम नहीं। हाँ, जो प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट साइंस एक्सपेरिमेंट, स्पोर्ट्स की बात करें, आर्ट आर्ट की बात करें, तो वहां पे क्या चाहिए आपको? फेस टू फेस टीचिंग चाहिए, बिकॉज यू कैन हैव अ बेटर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, बेटर हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना? बट अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, वेयर लर्निंग इज मेनली इन्वॉल्व listening, reading, या discussion, then you can talk about online education is a best method, right? Yes ma'am, yes ma'am. So you can talk about it is effective for some subjects, right? Ma'am, Yeah. because some students feel shy to speak in online classes Yeah. because they thought how others feel about me if Hmm. I speak wrong. But Hmm. in classroom education, they are more familiar with the other students. Hmm. They daily interact with each other, Yeah. so they know each other ki how he or she in the Hmm. classroom. If Yes. they also seeing their Hmm. most of time with they Hmm. also spend the most of time there. They Hmm. understand Hmm. both each other, so Yes. they get some knowledge from each other also. Yes. In online classes, I have also observed that students, they do not feel like confident enough to speak or ask question. Yes. Classroom education encourage uh, active participation, direct interaction also with yes ma'am. teachers. But here, some students who are not confident enough, I would say, they are less interactive, right? Okay. Online education is also a reason behind to live their life in self Hmm. by themselves. They Hmm. are not are more socialized person nowadays. Yes, yes, they are more correct, correct. Yes. Okay. Do you think education system should change? Yes, it And should change because Hmm.
because we should prefer on practical learning rather than Yes. अब फिर से ये books सारी vocab का reading. यूज कर लो in answering the question. Yes, ma'am. These are all for education. And by which Can I? people can increase their critical thinking, and the people can be more problem solving, and it also boost their confidence, and make education easy to understand rather than focusing on books knowledge. यस अब देखो आपका क्वेश्चन था डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम शुड चेंज बदलना चाहिए तो आप पास का प्रेजेंट का दोनों का बता सकते हो राइट कि अभी के टाइम में क्या है करंट सिस्टम क्या है इट इज मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड मतलब यस which actually puts excessive pressure on students and they limits the creativity. अब स्टूडेंट्स को आज के टाइम में क्या चाहिए व्हाट दे नीड द डिफरेंस इज दे नीड प्रैक्टिकल स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग एज अ रिजल्ट अगर अपडेट होगा एजुकेशन सिस्टम टू इंक्लूड द स्किल बेस्ड लर्निंग होगी इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स होंगे तो इट वुड बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल लाइफ सिचुएशंस रियल लाइफ चैलेंजेस राइट सो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कैसा होना चाहिए स्टूडेंट सेंटर्ड अभी हमने सेल्फ सेंटर्ड पढ़ा था नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है व्हाट इज स्टूडेंट सेंटर्ड वो अप्रोच जो किस पे फोकस करे स्टूडेंट्स की लर्निंग पे फोकस करे नॉट जस्ट एग्जाम्स राइट वो लर्निंग जो कैसे डिजाइन की जाए कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं उनके इंटरेस्ट क्या है उनकी एबिलिटी क्या है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए स्किल बेस्ड लर्निंग हो राइट दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम okay now let's talk about another topic which is technology now technology pe to you can talk a lot how has technology changed the way people communicate yes Can I try, ma'am? yes please Technology has changed in a very good way in communicate system. Nowadays, a number of people use the social media to communicate with their friend or family. But in past, they going send the letters to them for meeting and for any invitation card, gonna invite them in any party or birthday. But with the help of technology nowadays, with in the social media, they easily invite their relatives, friends. As a result, it saves the people time and also it saves some money. हाँ बट That रेपिटेशन नहीं करना आपने स्टार्टिंग में भी बोला टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड और फिर उसके बाद भी दोबारा बोला सो प्लीज डोंट रिपीट द सेम थिंग सिग्निफिकेंटली चेंज अगर एक बार बोल दिया तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे सो इन द okay, ma'am. पास्ट कम्युनिकेशन वाज मोस्टली फेस टू फेस है ना किसके थ्रू होती थी फोन कॉल्स के थ्रू लेटर्स के थ्रू बट अभी प्रेजेंट में क्या है वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन और पीपल आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग कम्युनिकेशन में आप बहुत बार इस वर्ड्स का यूज कर सकते हो अभी कम्युनिकेशन कैसी है फास्टर है मोर कन्वीनियंट है अब ग्लोबल कम्युनिकेशन अगर इम्प्रूव्ड हुई है आई वुड से सो पर्सनल इंटरेक्शन क्या हो गई है बिकॉज आप कंपैरिजन कर रहे हो पास्ट और प्रेजेंट का सो पर्सनल इंटरेक्शन कम हो गई है राइट so you can use all this vocabulary in technology and communication related topic yes Mohammed please ask what's your question Ma'am, I just want to say that I just want to go Canada in May. Can it possible a visa get in 1 month? 1 month
प्लीज यू नीड टू Yeah. कनेक्ट विद वीजा सर्विसेज इन आवर एप्लीकेशन. आप वहां पे अपनी क्वेरी डालो and you will get an Yeah. update or a reward from the team. Okay? Ma'am, they needed IELTS scores. IELTS scores they need na. So when you are going to give IELTS exam? When are you planning to give? And ma'am, I just want to give in March. So it's okay if you're planning for March. We will be completing our but by the end of March. Yeah, ma'am. Okay, no problem. April only. April only. Okay, okay. Is No better. problem. If you're going to give the exam by the end of March, you will have a good score, but please keep on practicing every day. I won't say the Okay. entire day, but yes, at least half an hour to 1 hour every day. Okay? Yes. Okay. Now, next question. Do you think children are using technology too much? Yes, ma'am. Yes, please. I think nowadays juveniles use the most of technology gadget as compared to past. In the past time, they only playing some games with their neighbor and with their friends. But nowadays, they play some games on the on the mobile phone, such as they play some computerized games and some another type of games. As a result, in that thing, children face a lot of problem with their study and also its effect on their eyes because of lot of using the technological gadget. Yes. So many children, they are using technology excessively. है ना? टेक्नोलॉजी का यूज कैसा हो रहा है? एक्सेसिव वे में हो रहा है. इजी एक्सेस हो गया, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ऑनलाइन कंटेंट्स, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया. राइट? एंड किसकी कॉस्ट पे? आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, फेस टू फेस इंटरेक्शन ही खत्म हो गया. सो यू कैन टॉक अबाउट हियर कि आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है, ओनली इंडोर एक्टिविटीज है, स्क्रीन टाइम है. Now, as a result, overuse हुआ टेक्नोलॉजी का, it will affect the children's attention span, physical health, social skills, right? Talk about all these things. अगर children टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर रहे हैं, too much कर रहे हैं, what will be the result? हमें result तो बताना है, right? Next question. Will technology reduce opportunities in the future? I would like to listen from Noor. Yes, Noor. Yes, ma'am. Please answer. क्या टेक्नोलॉजी रिड्यूस करेगी जॉब अपॉर्चुनिटीज को फ्यूचर में? दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक Yeah. आंसर. Yes. प्रेजेंट की I बात feel. करो, फ्यूचर की बात करो. Mm-hmm. Yes. Yes, ma'am. I feel this technology might like strongly affect job opportunities, because these days we have AI, and like there are different kind of advancements in the technology, like agentic AI they have, because these days people are using agents to complete their work. So like the manpower is getting reduced day by day in most of the companies. And yeah, they are taking, but the people who have the knowledge of AI, but they are like they have the high opportunity of getting job. So the ones who are not learning the skills that have the like they which are being introduced into the market, like the ones who are not learning, they might affect with the jobs, and but the ones who are like learning the skills, बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट पहले क्या थी, ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, राइट? पास में जॉब्स कैसे थी? दे वर डन मैनुअली. Employment, yeah, they depended largely on they physical have to go and efforts, work. basic skills, because Yes. technology they play a limited role. But present में Yes. automation की बात करें अगर हम, right, Automation, digital yeah. tools की बात करें, they are replacing the routine and the repetitive jobs, right? Yeah. Yes.
अभी क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या क्लरिकल वर्क की बात करें या न्यू रोल्स की बात करें, जो भी Yeah, आईटी में है, डेटा, ऑनलाइन yes, सर्विसेज बहुत ज्यादा इमर्ज everything कर will रहे हैं. include. You can talk about future. In the future, technology may reduce certain jobs. It will also create new career paths as well, but that will require again the advanced skills, right? Advanced skills, yes. आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, बट देयर विल बी Yes. सम एडवांसमेंट इन द स्किल्स Yeah. आल्सो जो रिक्वायर होंगी. Okay. Got it? So always plan your answer. जब भी आप आंसर दोगे, you need to first listen कि एग्जामिनर चाहता क्या है, what he is asking. Once you Yes, ma'am. I get understand, confused. Yeah. Avrish, this session will be uploaded on the application dear. You need not to take any screenshot. आप दोबारा से इस सेशन को देख सकते हो. Okay? The same session will be uploaded every day. By the afternoon, you can re-watch this session. So please don't worry about any vocab. आप जब चाहो इस सेशन को देख सकते हो. It gonna upload on YouTube as well. Right? So what I want from all of you is to speak 30 seconds. Just speak for 30 seconds on any topic of your choice. It can be society, it can be education and creativity, society and mental health. Just try to combine two topics, technology and privacy also. Oh, I got a message. Ma'am, I'm totally confused with the ideas while answering. Yes, I know. That is why I was asking you a question, because I know sometimes you do not get ideas. So that is why strategies क्यों दी है, to plan your answer. क्वेश्चन को सुनो, पास का है, प्रेजेंट का है, पास की स्टेटमेंट क्रिएट करो, पास के आइडियाज सोचो, प्रेजेंट, वी ऑल हैव आइडियाज. इट्स ओनली टू जनरेट and create a statement, right? Yes, ma'am. Part 3 need to be strong enough. Part 3 ही आपका final score describe करता है. Yes, Samo. Ma'am, I would like to ask that how to use idioms in our part 3 or part 2 answer. Definitely, Because just give me a day. We will do this session about vocab. आज हमने करा है, हम idioms भी करेंगे. Okay, so the whole session will be for speaking idioms. Okay, so don't worry. I cannot teach you in just 5 minutes or 10 minutes. I will conduct a whole session based on this. Most no, ma'am, probably by today or by day after tomorrow. Like tomorrow no, or ma'am, day after tomorrow. ma'am, when I try to speak in my home after class, so I usually don't able to use idioms in my line because I'm just fumble or I don't get any idea to Yes. so how to add these idioms in our answer. No problem, no problem. When I'll be conducting a session, you will know that how you can use idioms in your speaking. Okay? Thank you. No worries. Yes. Anybody else? Any doubt? Any queries? Just please speak for 30 seconds on any topic of your choice. आप सोसाइटी के बारे में बात करो, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पार्ट 3 में आई वुड से आते ही आते हैं. सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. अगेन इट शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है आपका पार्ट 3, राइट? रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप थोड़ा भी बोल रहे हो ना स्पीकिंग में, समझ लो कि आप आइल्स के लिए रेडी हो. परफेक्ट आंसर नहीं दे रहे, बट प्रोग्रेस तो चाहिए ना. लेकिन अगर आप बोल ही नहीं रहे हो तो आपका स्पीकिंग कैसे इंप्रूव होगा, मुझे ये बताओ. आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस इफ यू आर नॉट स्पीकिंग, राइट? सो आइल्स का एग्जाम है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हाई चाहिए. हेजिटेशन तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, right? So I'm giving you 3 topics. Please just try to speak 1 minute on all these 3 topics: technology or children, education and skills, society and lifestyle.
देखो, इन्हीं के अराउंड आपके टॉपिक्स रिवॉल्व करते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी हो सकता है, टेक्नोलॉजी और चिल्ड्रन हो सकता है, एजुकेशन एंड स्किल्स हो सकता है, एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी हो सकता है, बट टॉपिक्स यही रहते हैं, राइट? सो आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है आइल्स में, and I believe that you all can do it very well. I have seen an improvement in many of you, those who were from the very beginning. Beginning say I remember only, I guess, Chanpreet and Rahul, they are since beginning. Now Rajveer is also very consistent in the classes, right? A very regular one. Gursimran is also regular. Noor is also regular. So please regular in your classes, तभी improvement दिखेगी. Mohammed is also regular, he just left now, right? Yes, everyone. So we will practice every day, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No worries. Okay, then see you all tomorrow. Bye bye. Take care. Bye, ma'am. Bye, Thank you, bye. ma'am. Bye, ma'am. Have a Have a good nice day. day, ma'am. Have a Thank nice you day. so much. Bye. Bye.